Okay, good morning to you all. Welcome back to my YouTube channel Medical Classes by Dr. Srinidhi Kumar Acharya. Please subscribe my channel and also please give valuable comments. So as we know, in the last class, we were discussing about some of the basic things regarding reading of an X-ray. Okay, so in that we have seen the position and as well as rotation. What is the importance of the position? You have to take the X-ray in a right position. If you take the X-ray in a wrong position, that will give the wrong findings. Similarly, the rotation. If you are tilted to some side, or if you are not straight enough, you are rotated to some side, left side or right side, then what actually happens is the X-ray findings will also going to vary. Some of the normal things may looks like abnormal. Okay, cardiac shadow may shift from one side to another side. If the cardiac shadow is present in the area where it has to be present, then it is normal. But because of the rotation effect, if the cardiac shadow is slightly shifted to right, then we will interpret as right ventricular hypertrophy. Okay, that's the wrong finding. So like that, rotation and tilting, so that is also important. Now this portion we have seen, and now today we will discuss some of the other aspects regarding the X-ray reading, especially chest X-ray. Now in the chest X-ray, you have to always keep in mind about the soft tissues. In the chest area, we have got different soft tissues, isn't it? What is seen in the X-ray is the lung parenchyma. Lung parenchyma means lung parenchyma contains the bronchus, air inside, and some of the blood vessels and all those things. Now in the chest area, apart from the lung, there are so many other things, isn't it? Now what are the other things which are present in the chest? One is muscles. Especially in the chest area, we have got pectoral muscles. Okay, pectoral muscles. Now pectoral muscles may give a shadow of the muscle, and many of the time, so that particular shadow may confuse with so many other findings of the lung. Okay, that we will see. Especially the pectoral muscles. In the soft tissues, first we'll see the pectoral shadow. When you have got a pectoral muscle, if it is present, suppose a shadow is there, the shadow is that of the pectoral muscles, it is not that of the lung parenchyma. So then what happens? So you will have a whitish appearance over the chest, okay, over the lung parenchyma. So which may confuse with the consolidation. Consolidation में भी जो है आपको whitish जो पैच मिलेगा, okay? और यहाँ पे जो pectoral muscle का जो shadow है, जो एक्सरे में आ रहा है, वो भी जो है आपको एक तरीके से कंसोलिडेशन जैसा कंफ्यूज कर सकता है. But how to differentiate this? Now, see, this is the picture if you see. Now, in this case, this particular white portion which is present here, it is not consolidation, or it is not pneumonia, or it is not collapse or something like that. Okay, but देखते वक्त आपको कैसा लगे? देखो कि centrally, as trachea is centrally placed, okay, it is normal, and then okay, it is equidistant from the midline. The medial end of the clavicle is equidistant from the midline or paravertebral line. So yes, this X-ray is centrally placed and positioning is correct. Now look at this whitish arrow or whitish shadow. The whitish shadow is actually the shadow of the pectoral muscle, but see how it is creating a confusion. Okay, now the question comes, how to differentiate the actual consolidation from this type of shadows? Okay, this type of shadows. Now see, pectoral muscles are present on the both sides of the chest. Okay, so sometime one side of the chest may show the pectoral shadow, and another side of the chest may not show the pectoral shadow. That depends upon how the lights come actually. Okay, and what is the position, etc. Now here it is pectoral shadow. So how you will differentiate?
मोस्टली इफ इट इज अ पेक्टोरल शैडो, इफ एवरीथिंग इज फाइन, इट शुड बी बाईलैटरल. अगर है ना टेक्निकल इफेक्ट है, टेक्निकल डिफेक्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है एक्सरे लेने में, तो पेक्टोरल मसल का शैडो राइट साइड में भी आना चाहिए, लेफ्ट साइड में भी आना चाहिए. मान लो कभी कभी जो है कुछ चीज़ की वजह से वो नहीं आया, जैसे इस केस में है, एक्चुअली ये पेक्टोरल शैडो है बट ये अपर पार्ट ऑफ द लंग में है, राइट लंग में है, तो ये हमें कंफ्यूज करेगा. सो हाउ टू डिफरेंशिएट? सी इट इज़ वेरी सिंपल लॉजिक. क्या लॉजिक है? कंसोलिडेशन होगा तो कहाँ पे होगा? लंग्स के अंदर होगा. तो शैडो अगर आया तो कहाँ पे आना पड़ेगा? लंग में आना पड़ेगा. लंग पैरेंकाइमा में होना चाहिए ना. बट यहाँ पे देखो शैडो जो है चेस्ट कैविटी से बाहर जा रहा है, चेस्ट वॉल से बाहर जा रहा है और यहाँ पे लिमिटेड नहीं. देखो दिस इज एक्चुअली द बॉर्डर ऑफ द लंग एक्चुअली यहाँ पे है ना, ये जो लाइन दिख रहा है आपको. बट एक्चुअली दिस शैडो इज गोइंग आउटसाइड दैट लंग. दैट मीन्स इट इज गोइंग आउटसाइड द चेस्ट वॉल ऑल्सो. So that is a pectoral muscle का insertion origin आपको पता है. Okay, so therefore this is how it will differentiate. If it is a lung lesion, maybe collapse, maybe consolidation, maybe pneumonic patch, whatever may be, it should be present there within the limits of the lung parenchyma only, and it should not cross that. वो cross करेगा भी नहीं है. Okay, so therefore this is not a consolidation. This is a technical problem related to pectoral shadow. So this is one of the main thing which can confuse you with the है ना. पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इसके बाद भी जो है इस टाइप का जो प्रॉब्लम की वजह से जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है और कभी कभी यू कैन लैंड अप इन रॉन्ग डायग्नोसिस. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज प्रेजेंट इज ब्रेस्ट शैडो. Okay, especially this problem will be there in the female, and even sometimes breast shadow may be also seen in case of a fatty males also. So breast shadow may confuse with the many things. Now see this portion, जो lower most portion में यहाँ पे जो cups जैसा है, यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, actually this is a shadow of the breast. This is a shadow of the breast. But if you look it carefully, okay, what happens is this gives the appearance that यहाँ पे कुछ fluid भरा हुआ है. ओके, यहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा हुआ है एंड इट गिव्स ए रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ अ प्लूरल एफ्यूजन. दोनों साइड में बाइलैटरल प्लूरल एफ्यूजन का जो रॉन्ग एक इमेज आपको दिखा रहा है. रेस्ट ऑफ द लंग पैरेंकाइमा इज नॉर्मल एब्सेंट. सेंट्रली प्लेस्ड ट्रेकिया इज ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रली प्लेस्ड. इक्विडिस्टेंस क्लैविकल इज देयर. ओके, एंड हाइलम ठीक है, राइट साइड का लोअर साइड में है, लेफ्ट साइड का थोड़ा अपर साइड में है, एंड दिस आर द वेजल्स विच आर कमिंग ओवर देयर. एवरीथिंग इज फाइन. But so this particular breast parenchyma, breast shadow may give a wrong impression. See, actually this is the dome of the diaphragm. This is the right dome of the diaphragm. This is the left dome of the diaphragm, and this is the breast shadow which is present over here. Okay, so this is giving a wrong impression of pleural effusion. That has to be kept in mind. And here also, because of the breast shadow, this arrow mark if you see, तो यहाँ पे भी जो है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट दिखाई पड़ रहा है आपका लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज में. आई थिंक यू रिमेंबर दिस एरिया इज बिलोंग्स टू लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज एंड लेफ्ट एट्रियम. ओके, सो यहाँ पे भी थोड़ा है, इट लुक्स लाइक दैट इट इज क्वाइट एनलार्ज. सो एक्चुअली नथिंग इज देयर, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ओवर राइडिंग ऑफ द ब्रेस्ट शैडो. So this has to be also kept in mind. Of course, this problem will not be there in the children. So this problem will be there in the adult X-rays only. As far as children, जो हमारा जो एरिया है तो उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा. पेक्टोरल मसल का आ सकता है बट दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर. बट यू हैव टू कीप इन माइंड हियर देयर इज नो एनी पैथोलॉजी एग्जिस्टिंग, बट सिंपली बिकॉज ऑफ द ओवरराइडिंग ऑफ दिस ब्रेस्ट शैडो द थिंग्स आर हैपनिंग. ओके, नाउ अगेन one more X-ray which shows here. So now here in the left side if you see there is a breast shadow present, है ना. breast shadow इस तरीके से जो जा रहा है, ठीक है, तो ये पूरा breast shadow है. But in the right side there is no breast shadow. So this suggests that patient has undergone mastectomy on the one side. जो right side में जो mastectomy हुआ है इसलिए वहाँ पे shadow नहीं आ रहा है, but left side में जो है mastectomy नहीं हुआ है, so इसलिए breast shadow is coming over. Okay. Now there is one more important finding, especially in the females. Now breast nipple shadow on the X-ray. Sometimes the breast nipple and areolar portion and breast nipple, so that may also create a shadow in the X-ray, and most of the time it looks like a parenchymal lesion. ठीक है, breast nipple का जो shadow है many times it also create a confusion with the
पैरेन्काइमा का अंदर ही कोई लीजन है, मे बी रिंग लीजन, मे बी कैविटी और मे बी सम मास और मे बी एनलार्ज लिम्फ नोड्स, इस तरह के कंफ्यूजन इट विल गोइंग टू क्रिएट. इन दिस एक्सरे इफ यू सी, यू स्टार्ट फ्रॉम द लोअर मोस्ट साइड हियर, दिस इज द डोम ऑफ द डायफ्राम लेफ्ट साइड. ओके, तो यहाँ पे उसका जस्ट ऊपर जो एक वाइटिश जो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली दिस इज निपल शैडो. सेम हियर ऑल्सो in the left side also. Okay, so just above the dome of the diaphragm over here, so this particular white portion, so this is nothing but nipple shadow. But if you are not aware of these things, actually this can create a confusion with the cavity, or sometime maybe a ring lesion, or maybe an enlarged lymph nodes, whatever. Okay, so this has to be also kept in mind. So these are some of the normal things that you have to keep in mind before reading or commenting on any x-rays. Okay, before commenting on x-rays, we should know some of the basic things. Yes, now go further. Some of the other points which has to be remembered is sometime a neurofibroma. Neurofibroma can occur at any area, fibrous tissue, neurotubular nerve thickening, etc. Okay, neurofibroma. So that may also create a lesion. If you look into this particular X-ray, now this is the lowermost. See, ये जो आगे आपका actually this is the dome of the diaphragm, and there is an overshadow over here, isn't it? So maybe this is a breast. Okay, again this is a breast shadow. In the left side also there's a breast shadow, but inside the breast shadow, if you look over here, okay, ये जो portion है एकदम जो round है, right side, right dome of the diaphragm, right side में dome of the diaphragm में एक जो है round lesion आपको छोटा सा दिखाई पड़ रहा है. Okay, so this is actually neurofibroma. This is actually neurofibroma. Now this may create a lot of confusion while reading the x-rays. Okay, so ये actually skin का एक problem है. स्किन में न्यूरोफाइब्रोमा है उसको, या जो भी है टिश्यू है उसमें न्यूरोफाइब्रोमा है. लंग पैरेन्काइमा का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे. ओके, बट स्टिल इट क्रिएट्स सम कंफ्यूजन ऑन रीडिंग. Okay, so now rest of the things, if you see in this x-ray, yes, read the x-ray. Yes, this is centrally placed. Trachea is there, centrally placed. See, the trachea is divided. This is the carina portion, and this is the right bronchus. See, it is the left bronchus over here, and this is the ascending aorta, and this is the right atrium. Okay, so superior vena cava, inferior vena cava, so everything is fine over here. Hilum is correct. Hilum ज़्यादा exaggerated नहीं है, ठीक है. And very importantly, you see in this X-ray how these vessels are dividing. We know that hilum is the area where maximum vessels are present, pulmonary vessels are present, and then comes the arteries are present. Okay, many veins are present. So this area is a highly vascular, and वहाँ से जो vessels है वो हमेशा आपको whitish दिखाई पड़ेगा. You know that in the last class we have seen it. And see the vessels, how they are, when they are going upside or downside, how they are get divided, they get tapered, isn't it? So very clearly seen here. These vessels, जो vessel का जो vascular marking है, that is whitish marking, it as it goes downwards, as it goes upwards, it goes on tapering. So this tapering is always suggestive of vasculature. ठीक है, अगर वो फाइब्रोसिस अगर कुछ होता तो वो टेपर नहीं होता, अनटेपर होके वो चलता या इक्वल इसमें चलता हो, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो ऑफ कोर्स दिस इज द पॉइंट वेर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इन द सेकेंड एक्सरे अगेन इन द सी इन द राइट साइड, इफ यू सी dome of the diaphragm, then next rib, and after 2 ribs again we will have a whitish portion. Okay, this is actually nothing but a neurofibroma. This is skin or subcutaneous tissue finding, but it is giving its impression in the X-ray. We should not confuse. Now the question is how you will differentiate that. देखो ऐसे बोलने में तो आसान है, बट ये लंग लीजन नहीं है बोल के आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ इट्स वेरी सिंपल. सपोज अगर ये लंग लीजन होता, सपोज, ओके, कैन यू सी इन द बोथ द लीजन्स, कैन यू सी एनी ऑफ द लंग मार्किंग्स? देयर इज नो मार्किंग, इज इट? लंग में अगर कोई लीजन है तो ठीक है, थोड़ा बहुत वाइटिश लीजन है, पर थोड़ा बहुत उसमें लंग्स का जो है सरफेस मार्किंग्स होगा, उसमें लंग्स का जो है वैस्कुलर मार्किंग्स होगा, थोड़ा बहुत ब्लैकिश दिखाई पड़ेगा. वो बीच बीच में खराब भी हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है. अगर लीजन है तो देयर मे बी सम डिस्टर्बेंस इन द लंग पैरेन्काइमा, बट इफ यू सी दीज 2 लीजन्स, सी इट्स वेरी क्लियर, देयर इज नो लंग वैस्कुलर मार्किंग्स आर विजिबल. एक्चुअली लंग वैस्कुलर मार्किंग इस पैच का नीचे है, मतलब एक्सरे में बता रहा हूँ ना, एक्सरे में इस पैच का नीचे है.
तो इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर रियली ये लंग का ही अगर कोई लीजन होता तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है डिस्टर्ब्ड पैची लंग मार्क्सिंग दिखना चाहिए था, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हाइलम एरिया में देखो, ठीक है, यहाँ पे भी वाइटिश है, बट इसके बीच में क्या है, लंग मार्क्सिंग दिख रहा है ना, बट ऐसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी हैव टू डिफरेंशिएट ए लंग लीजन, maybe parenchymal lesion, lung lesion, whatever, from the lesion other than the lung, maybe from the skin, maybe from the bone, maybe from the subcutaneous area, maybe from the muscles. Okay, so this is very important. Therefore, बहुत keen observation का जरूरत है. Just look into the surface marking. There is no कोई भी marking नहीं है इसमें. Okay, so now this is another case that you have to looking other than the lung tissues. Now, if you see this area, ठीक है, तो ये क्या हो, दिस इज अ केस ऑफ सर्जिकल एम्फिसिमा वेयर वी से सी दिस इज अ लंग टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे लंग टिश्यू है, तो यहाँ पे ब्लैकिश और वाइटिश जो भी मिलना वो नॉर्मल है, बट यू आर गेटिंग दिस ब्लैकिश ऑल ओवर द नेक। सी यू गो बैक टू यहाँ पे जो इस एक्सरे में देखो आप, नेक एरिया में कोई प्रॉब्लम है क्या? नेक एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक एरिया इज वेरी क्लियर, ओनली द ब्लैकिश शैडोज आर सीन ओवर द लंग पैरेंकाइमा, बट if you look into this x-ray, it is not like that. Okay, even the neck area is also full of blackish area. That means wherever there is a blackish area, it suggests that there is a air. There is a air. Now this is a case of surgical emphysema because there is some क्या है कि air is leaking into the subcutaneous area or into the skin area, skin ka beneath. There is presence of air beneath the skin. It may be in the subcutaneous area. Okay, somewhere from the pleura, actually from the pleura or from the lung, air is getting leaked into the subcutaneous area. This is possible in case of a spontaneous pneumothorax or some traumas or after the surgery, etc. Therefore, it is called as surgical emphysema. Okay, both the cases suggest you of a surgical emphysema. Now, this has to be identified. ठीक है, जो एयर का शेडो है उसका नॉर्मल एरिया है, वो छोड़ के बाकी जगह में भी है, तो ये सब पहले ही हमारा दिमाग को फ्लैश होना चाहिए, एक्सरे देख करके आपको फ्लैश होना चाहिए कि ये एयर शैडो जो है जहाँ पे होना है वहाँ के अलावा भी दूसरा जगह में भी है. सो दैट देयरफॉर इट इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज समथिंग स्पेशल. ओनली वन कंडीशन वेयर एयर कैन स्प्रेड थ्रू आउट द नेक एरिया and other areas, so that is surgical emphysema. This is commonly possible in case of any traumas, spontaneous pneumothorax, tension pneumothorax, or any of the surgical procedures related to the chest area. So now these are the things. We have seen the pectoral shadow, we have seen the breast shadow, and we have seen the nipple shadow, we have seen the neurofibroma shadow or some other ganglios, etc. Then this is surgical emphysema. So these are some of the things that you have to see in this case. That is a soft tissue. ये जितना भी हमने अभी डिस्कशन किया सॉफ्ट टिश्यू में, न्यूरोफाइब्रोमा सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, ब्रेस्ट निपल शैडो सॉफ्ट टिश्यू है. तो सॉफ्ट टिश्यू को हमने देखा. So one of the main component which is present in the chest area is soft tissue. We have seen that. Now another important part which is present in the chest area is bones, isn't it? Because whole chest area is made up of the bones. It is made up of sternum, it is made up of from the back side, posterior it is made up of the vertebrae, anteriorly it is made up of the ribs, and there is also some portion of the upper portion of the humerus, and some portion of the scapula is also contributing. But however, the main is thorax, there is a rib cage, sternum and vertebra. Now you know that these ribs or bones, they are radio opaque, so they are not radiolucent. ठीक है, बोन का शैडो हमेशा ब्लैक नहीं आ सकता है, जहाँ जहाँ पे बोन है वहाँ पे तो शैडो हमेशा वाइटिश ही आएगा. नाउ दिस बोन शैडो हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सो मेनी ऑफ द अदर वाइट शैडोज. बोन शैडो भी वाइट ही रहेगा, बट इट हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सो मेनी ऑफ अदर वाइट शैडोज विच मे बी देयर इन द lungs or lung parenchyma due to some of the pathology. Now this differentiation is very, very important. In the bone, if you see ribs, clavicle, yes, clavicle is there, ribs is there, sternum is there, vertebra is there, proximal humerus is there, and some portion of the scapula is there. So these are all the bony shadows that can occur or that will occur in case of a X-ray. Now we will see one by one. Now, talking about the ribs, as I told in the last class also, now ribs are always obliquely placed. Okay,
हम जैसे सोचते हैं हॉरिजॉन्टली नहीं है, रिब्स हमेशा ऑब्लिक्वली है. सो नाउ सपोज a rib instead of oblique nature, if it is present horizontally, so that suggests that there is volume overload inside the chest cavity, inside the lung parenchyma. Okay, so this is usually possible in case of emphysema. Emphysema मतलब क्या है? Increased volume of the lung parenchyma, and as a result, to accommodate this increased volume, chest wall will go into expand, और chest wall का ट्रांसवर्स डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर दोनों इक्वल हो जाता है. जब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और जो उसका यूजुअली द रेशियो इज 7:5, द ट्रांसवर्स जो है वो 7 रहा तो एंटीरियर पोस्टीरियर का जो रेशियो है वो 5 है. बट जब वॉल्यूम बढ़ जाता है लंग्स के अंदर, वो फ्लूइड हो सकता है या जो भी हो सकता है, उसकी वजह से जो वॉल्यूम जब बढ़ गया, सो टू एकोमोडेट दैट पर्टिकुलर एक्स्ट्रा वॉल्यूम, नाउ द रिब केज हैज टू, बोन केज हैज टू, or chest has to expand now. So in the process, the anterior posterior diameter and the transverse diameter, they become equal, and this leads to a box like, what you say, barrel shaped chest. एक box जैसा बन जाएगा, क्योंकि उसका दोनों ends जो है वो लेंथ एंड ब्रेथ जो है उसका इक्वल हो जाएगा. So in the process, the obliquely placed ribs become more and more horizontal. If you see in the second X-ray, in this case, if you look into the second X-ray, it's very clear. See, the ribs are more horizontal rather than they are oblique. Even in the first X-ray also, compared to the normal one, so this is actually more horizontally placed. So they are not much oblique. Okay, if you go back to this particular X-ray, if you see the normal X-ray, see ribs. See, in this case, the ribs are obliquely faced. Okay, ribs are obliquely faced. But if you look into this X-ray, the ribs are not obliquely faced, rather than more horizontally placed. Now in the ribs, the second important part that you have to look into the chest X-ray is the ribs. In the ribs, if you see whether the ribs are obliquely faced or whether they are horizontally placed. So this is one thing related to ribs. Now then, another thing that you have to see is sometimes there may be crowding of the ribs. Ribs, they are present in a normal distance, isn't it? Between the two ribs there will be some distance, but sometimes you can see that there will be crowding of the ribs. Ribs जो है वो पास आ गए, दूर नहीं है, पास आ गए. If you look into the first picture here, see जो फर्स्ट ऊपर का फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, अब देखेंगे तो ये बहुत पास है. ओके, बहुत पास है. और यहाँ पे भी जो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, सो यहाँ पे भी पास है, जो एरो मार्क दिखा रहा है. ठीक है, और इन सेकेंड पिक्चर ऑल्सो इट इज पास में. सो इन द फर्स्ट केस इन द रिब्स, व्हाट वी हैव सीन इज रिब्स आर गेट एक्सपांडेड, दे बिकम more and more horizontal when the volume inside the lung has been increasing. Similarly, when volume, lungs के अंदर वॉल्यूम कम हो गया है ना, lungs के अंदर वॉल्यूम कम हो गया, तो क्या रिब्स जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे. ठीक है, देयर इज ए क्राउडिंग. जैसे एक बैग में है, एक बैग में ज़रूरत से ज़्यादा आपने कपड़ा भर दिया तो वो चारों साइड से फैल जाएगा, और आपका जो बैग है उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, वो स्क्वायर पोर्शन में बदल जाएगा, इजंट इट. उसी बैग से आप बहुत सारे कपड़े निकालेंगे और बहुत कम कपड़े है, बैग बड़ा है और कपड़ा 2-3 है, तो क्या होगा कि बैग वहीं पे सिकड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा भरा नहीं है. सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, वेयर द वॉल्यूम लॉस विल बी देयर. ठीक है, लंग पैरेंकाइमा जो एपेक्स एरिया में जहाँ पे होना चाहिए था, वो लंग पैरेंकाइमा यहाँ पे है ही नहीं है. शायद फाइब्रोसिस हुआ है, या तो कोलैप्स हुआ है, या कुछ भी हुआ है. तो इसकी वजह से रिब्स को जो है क्या है कि पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं है वहाँ पे, तो रिब्स सब जो है इकट्ठा हो गए. सो दिस इज कॉल्ड अ क्राउडिंग ऑफ द रिब्स. दिस इज कॉल्ड अ क्राउडिंग ऑफ द रिब्स, एंड यू शुड नो द क्राउडिंग ऑफ द रिब्स ऑल्सो. वेरी सिंपल. इफ इट इज हॉरिजॉन्टल, मोर एंड मोर हॉरिजॉन्टल, it suggests that the volume overload is there, like emphysema. Or sometimes ribs become more and more horizontal even in case of rickets. Okay, rickets and some of other bony deficiency problems. Also there will be rickets. Like rickets, there will be straightening of the ribs. That's also called a rachitic chest or long flat chest. वहाँ पे सब क्या होता है कि
दी बोनी मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, लिम्ब का रिब्स का जो मूवमेंट है वो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, वो फिक्स हो चुका है, ठीक है. दैट यूजुअली हैपेंस इन केस ऑफ रिकेट्स. एनीवे, so now crowding of the ribs is another important thing that you have to see. In the first picture we have seen the horizontal or straightening of the ribs. Here that is overcrowding of the ribs. Volume loss, one is volume overload, another one is volume loss. Now another important thing that you have to see in the bone like ribs etc. Scoliosis with the convexity on the opposite side lesion. Okay, now if you look into this particular X-ray, this is the trachea. Trachea का just नीचे आपको पता है what is that? That is spines. Okay, this is the spine and this is the vertebral body. Okay, vertebral body. Now what actually happens? This is scoliosis. Scoliosis means side deviation. ठीक है, यहाँ पे scoliosis हुआ है. Vertebral column is not straight and it is deviated to the sides. Okay, so now if you see why this scoliosis happens. ये स्कोलियोसिस का कारण है, स्कोलियोसिस विद द कॉन्वेक्सिटी ऑन द ऑपोजिट साइड लीजन. ओके, ऑपोजिट साइड लीजन. सो दैट मीन्स यहाँ पे उसका जो कॉन्वेक्सिटी आया, इसका कॉन्वेक्सिटी जो है यहाँ पे आया, और ये जो लीजन है ऑपोजिट साइड का लीजन है. दैट मीन्स यहाँ पे अगर वॉल्यूम लॉस हो गया राइट साइड में, इफ देयर इज ए मोर वॉल्यूम लॉस, देन व्हाट हैपेंस इज, सो दिस विल बी पुल्ड इनसाइड, ठीक है, and that leads to scoliosis. Okay, so this is usually happens in case of long term volume loss. When there is a long term volume loss, so this type of problems will be there. Okay, again you have to look into this particular portion also and look at the ribs very clearly visible here. See how they are normally actually, as far as ribs is concerned, this is normal. Therefore the ribs are, see, they are obliquely faced, they are not straight. पहले वाला जो picture है उसमें वो straight था. Okay, now again you comment on the position of this particular, the medial head of the clavicle. See, medial head of the clavicle is not present equidistant from the paravertebral line. The reason is ये पूरा spine जो है bend हो चुका है, तो इसकी वजह से ये इसका position भी alter हुआ है. See, medial head of the clavicle in the right side present over here and in the left side it is present far distance. So this is what you say, positioning is not correct. This positioning is not correct because of not the technical problem, this is because of the pathological problem. Pathological problem की वजह से spine ही जो है टेढ़ा हो गया और इसकी वजह से जो है ये equidistance में नहीं है, ठीक है. तो इस साइड में ये ज़्यादा, मतलब राइट साइड में ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है. That is because of the lesion is present on the right side and therefore it is pulling it as shown in the arrow mark. Okay, now as far as the ribs are concerned, we have to look into some of the other facts also. So that's about the rib fractures. Rib fracture. So rib fracture is quite common in the neonate actually. Suppose if you are doing some chest compression or some resuscitation to the newborn or sometime even to the infants etc., then there is every possibility of rib fracture. ठीक है. So in the neonate actually rib fracture, neonates का जितना भी आपको पास एक्सरे आता है, ठीक है, अगर वो बर्थ एस्फिक्सिया की हिस्ट्री के साथ आता है तो यू हैव टू लुक इनटू रिब फ्रैक्चर. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर केस. ओके, देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द रिब. द रिंग यहाँ पे जो राउंड लगा है इन द फर्स्ट एक्सरे, इफ यू सी रिब नंबर 1 2 3 4, सी fourth number, it's a clear cut fracture. Now you have to look into rib fractures also. Okay, so it's a clear cut rib fractures. This has to be seen. And if in the second x-ray, if you see again these arrow marks very clearly showing the rib fracture. So these are some of the points that we can miss if we are not knowing this fact. ये fact देखना है बोल के अगर हमें नहीं पता है तो most of the time जो है ये जो है ये मिस हो सकता है. इसलिए ABCD वाला जो हमारा फॉर्मेट है, A फॉर एयरवे एंड B फॉर ब्रोंकस, C फॉर लाइक दैट जो है कार्डिया, ठीक है, या सॉफ्ट टिश्यू बोन के जो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न से आप जाएंगे तो मिस नहीं होंगे. 1 by 1 पोजिशनिंग, रोटेशन, सॉफ्ट टिश्यू, बोन केज, ऐसे इसी पैटर्न में इसी क्रम में आपको देखते जाना है, तब आप मिस नहीं करेंगे. अदरवाइज यू कैन मिस द थिंग. सो दिस इज about the fractures. Okay, so now we have to look into vertebrae. Now vertebrae also is very important. Vertebrae
पीछे के साइड में रहता है. वी कैन काउंट दी वर्टेब्रल बॉडीज ऑल्सो. वो जो वहाँ पे जो पोरस जैसा दिखता है, गैप दिखता है, सो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स द स्पाइनस प्रोसेस. वी नो दैट. एनीवे, वर्टेब्रल स्पाइन्स विल मेक्स द मिड लाइन. एक्सरे में जो मिड लाइन हम जो देखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द वर्टेब्रल का जो स्पाइन्स है. ओके, स्पाइन ऑफ द वर्टेब्रा. ओके, सो हियर ऑल्सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर मिड लाइन, ऑफकोर्स ये एबनॉर्मल है मिड लाइन. सो ये जो है, ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो है पूरा नीचे सब देख देंगे, ये तो मिड लाइन है, तो स्पाइन प्रोसेस है वो. ओके, स्पाइन ऑफ द वर्टेब्रास. नाउ हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ट्रेकियल शिफ्ट एंड स्कोलियोसिस. नाउ दिस वर्टेब्रा, पोजीशन ऑफ द वर्टेब्रा हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेकियल शिफ्ट एंड स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस को वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है, दैट वी हैव सीन इन द लास्ट एक्सरे. ठीक है, सो हाउ इट इज शिफ्टेड. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ट्रेकियल शिफ्ट. Okay, so trachea right to, we will see some of the x-rays later. Okay, so that also helps. Now in the vertebrae we have to see vertebral fractures. There may be vertebral fractures and there may be osteophytes. Okay, जो osteophytes, of course osteophytes आप देखना चाहते हैं तो AP व्यू जो है वर्टेब्रा के AP व्यू से जो है बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेगा. बट समटाइम व्हेन यू आर टेकिंग ए PA व्यू फॉर द चेस्ट एक्सरे, उसमें भी हमें वर्टेब्रा दिखता है, तो वहाँ पे भी यू कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ द ऑस्टियोफाइट्स. सम ऑफ द ऑस्टियोफाइट्स कैन बी सीन. नाउ इफ ऑल द वर्टेब्रास आर सीन, then it suggests that overexposure. Now the question comes, overexposure means बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है पेशेंट ना. सो overexposure, तो आप पूछ सकते हैं सर व्हाट इज द प्रॉब्लम. ओवर एक्सपोजर, जितना अच्छे एक्सपोजर हो गए तो अच्छा है ना, तो क्या दिक्कत है. नहीं, एज इफ देर इज नो मच प्रॉब्लम, बट व्हेन यू गेट एक्सपोज ओवर अदर देन द चेस्ट एरियाज, देन यू गेट सो मेनी अदर अनवांटेड फाइंडिंग्स देयर, है ना. हमें तो देखना चाहते हैं हम चेस्ट एरिया को, बट अगर आप ज़्यादा बहुत एक्सपोज करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, बहुत ज़्यादा फैला के ऐसे खड़े हो जाएंगे, सो क्या होता है कि बहुत सारे अनवांटेड चीज़ भी दिखना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो इससे हमें कंफ्यूज हो सकता है. अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है. इफ यूर एक्सपर्ट एक्सरे रीडर, नो प्रॉब्लम. सो इफ ओनली few of the vertebrae are seen, then it is called as correct exposure. And if you are able to count all the vertebrae, then it is called as overexposure. As in this case, if you see the second picture, so you are able to count actually all the vertebrae. See, you know, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See, you are able to count all the vertebrae. तो यूजुअली जो है, जो नॉर्मली हम जो एक्सरे लेते हैं वहाँ पे ये नीचे जो है T8 के बाद जो है आपको इतना अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है. बट इफ इट इज सीन, all the vertebrae are seen very clearly, so then usually we will call it as overexposure. वैसा कोई हार्म नहीं है, but it may create so many confusion on reading. Anyway, so that's one important thing. Now in this X-ray, can you identify the defect, the arrow mark which is shown there? Yes, this is also a rib fracture actually. Here also a rib fracture is happening. Now apart from this, I will use this X-ray to explain some of the other points also. You look at the hilum and look at the surface markings. और vascular markings जो है बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है. See, so there goes on tapering as they from the center when they are going to the periphery. This bronchial, इसमें कोई bronchiovascular marking है, कुछ articular, कुछ vascular markings है. But only thing is when they move from the center to periphery, they go on tapering. See, in the right side is very very clear. Okay, they go on tapering. So that suggests they are normal bronchovascular marking. They are the normal lung markings. Nothing to worry. Okay, but in this case, if you see the arrow mark area, there is a small fracture. Okay, but this fracture is healed. यहाँ पे fracture है, but rib fracture heal हो गया. So when a rib fracture is healed, see this also looks like a ring-like structure. ठीक है. So sometime क्या है कि कोई foreign body हो सकता है, ऐसे कंफ्यूज हो सकेगा आप, है ना. कोई राउंड फॉरेन बॉडी है, कोई किसी फ्रूट का बीज वगैरह है, या कुछ ऐसे लगता है. एक्चुअली दिस इज नथिंग बट ए हील्ड रिब फ्रैक्चर. ओके, सो अगेन दिस ऑल्सो क्रिएट द कंफ्यूजन. ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिब फ्रैक्चर. दिस इज लैटरल व्यू. इन द लैटरल व्यू आप बहुत सारे अच्छे से देख सकते हैं. ठीक है, लैटरल व्यू. सी द रिब इज कंप्लीटली गॉन. दिस एरो मार्क, यू लुक, जस्ट लुक इनटू द एरो मार्क. These two ribs are completely gone. ठीक है. So this is again in the lateral view if you want to see the rib fracture. Now sometime, of course, this is not common in children. That is cuff fracture. Cuff fracture
हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा खांसने के बाद जो है the ribs are undergoing fracture. Okay, now this is actually common in the old aged people and as also those who are suffering from chronic obstructive pulmonary disorders, bronchiectasis जो भी है या CCF ऐसा condition है, तो वहाँ पे common है, not quite common in the children. And look at the arrow mark here. So the ribs, the last rib is undergoing fracture over here, and this is I think this is vertebral fracture. And here, yes, okay, जो first picture है. So the arrow mark shows the cuff fracture. This is not because of any other aspects, it's because of continuous cuffing. अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया और बोन वीक है, बोन जो है बहुत वीक है, so then it may lead to cuff fractures. Now another important thing that we have to see in the ribs is rib notching. Okay, rib notching. तो रिब का जो नॉर्मल काउंटर है वो चेंज हो गया, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट लुक एट द फर्स्ट पिक्चर ओवर हियर. सो एरो मार्क क्लियरली शोज दैट्स द पोर्शन वेयर द रिब हैज़ बीन नॉच्ड. दैट मीन्स कुछ रिब्स का इरोजन हुआ है, कुछ है कि रिब्स जो है वो आधा उसमें कुछ खा गया है, चूहे खा गया है, ऐसा लग रहा है. ठीक है, सो रिब नॉचिंग इज देयर. सो रिब नॉचिंग और ईटन अप अपीयरेंस है ना, रिब्स को आधा कोई खाया है, तो दिस टाइप ऑफ अपीयरेंसेस आर क्वाइट कॉमन स्पेशली इन केस ऑफ सेकेंडरीज. ठीक है, सेकेंडरीज में सेकेंडरीज टू द लंग्स, मैलिग्नेंसी वगैरह जो सेकेंडरी होता है लंग्स में, सो दैट इट इज कॉमन. इवन इन द सेकेंड पिक्चर ऑल्सो यू गेट रिब नॉचिंग. नाउ व्हेन यू आर लुकिंग टू द एक्सरेज you have to look into the ribs. In the ribs, what are the things that you have to see? Fracture, healing and all those things, and notching, rib notching. Rib notching may be present in some of the calcium या vitamin D deficiency problems also. Okay, and most commonly in the secondaries or some of the infiltration, bony infiltration. So then we will have the rib notching. So therefore you should have a keen observation. That is important. Each and every part you have to observe. ठीक है, किसी भी चीज़ को आप छोड़ना नहीं चाहिए. So then only you are able to catch all these findings. Yes, another is rib notching in COA, that is a coarctation of the aorta. Coarctation of the aorta is one of the problem. It is actually one of the problems related to congenital cardiac problem. Okay, so aorta, we know that X-ray में जो है ये जो portion है, if you go for the X-ray, so this particular portion, aortic knuckle will be present, isn't it? So I am using this X-ray, okay, second X-ray. So aortic notch will be present over here. So ये जो नॉर्मल है, दिस इज आयोटिक नकल. ओके, आयोटिक नकल के बाद यहाँ पे एक विंडो है, आयोटिक कौन सा कोई पल्मोनरी विंडो है, और विंडो के बाद जो है आपका लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज शुरू हो जाता है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल. नो यहाँ पे अगर ये जो आयोटिक नकल है, सो दैट इज व्हाट इज दैट आर्च ऑफ आयोटा. जो आर्च ऑफ आयोटा यहाँ से जो क्रॉस हो रहा है उसको इंडिकेट करता है. आई थिंक यू नो दैट, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. बट इफ देयर इज ए कोआर्टेशन, वहाँ पे एक पंक्चरिंग जैसा है या एक क्या है कि वहाँ पे एक फकरिंग जैसा है. ठीक है, तो बीच में. सो देन इन द एक्सरे इट गिव्स ए डिफरेंट पिक्चर. इन द एक्सरे इट गिव्स ए फिगर 3 लाइक साइन. ओके, सो दिस इज रिब नॉचिंग. तो यहाँ पे रिब नॉचिंग के साथ साथ ए फिगर 3 साइन आ सकता है, क्योंकि ये तो हो गया आयोटिक नकल, ऊपर वाला जो ये फिगर 3 में ऊपर वाला पोर्शन है ये आयोटिक नकल. बट यहाँ पे जो है ये जो उसमें कंस्ट्रिक्शन है आर्टरी में, उसकी वजह से ये जो है बीच में जो है ये डिप्रेशन ज़्यादा हो गया. सो दैट लीड्स टू फिगर 3 साइन. द फिगर 3 साइन इज कॉल्ड एज अ वेरी टिपिकल ऑफ अ कोआर्टेशन ऑफ अ आयोटा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर थिंग्स दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर इज अगेन रिब नॉचिंग. देयर आर मेनी एरियाज यू कैन सी रिब का जो एरो मार्क एरिया है, रिब का जो नॉर्मल सरफेस नहीं है ना, सो कि दिस पर्टिकुलर सरफेस इज नॉट स्मूथ as usually seen in case of ribs. So now it is notching in between. It is notching in between. So therefore, this has to be observed. Now this is osteophytes. Of course, this is not much important. Now this is rib eaten up appearance. Okay, if you want to see that eaten up, so you can see over here. See in the left side, if you see the rib has been eaten. Okay, rib eaten up. This is also quite common in case of a secondary. So rib notching, figure 3 sign ho gaya, eaten up appearance, rib healing, fractures. So many things are there that we have to observe in case of ribs. Okay, otherwise it will confuse with the other pathological findings. Okay, now this is an example of overexposure of the chest X-ray. ठीक है, when there is overexposure, see overexposure
थिंग्स आर वेरी क्लियरली सीन है ना, कि नीचे तक जो है आप वर्टेब्रा को काउंट कर सकते हैं. सो दैट सजेस्ट दैट इट्स ओवर एक्सपोजर. जब ओवर एक्सपोजर हो गया तो थोड़ा बहुत लिवर का पोर्शन भी आ गया, स्टोमक का पोर्शन भी आ गया, इंटेस्टाइन का पोर्शन भी आ गया. सो दैट क्रिएट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है ना. आप तो चेस्ट एरिया में फोकस करना चाहते हैं, बट इट इज नो. Another thing can you observe in this X-ray is a hyperlucency. देखो white जो blackish shadow है, that is very very dark over here. Okay, maybe patient is suffering from pneumothorax. Don't know, we don't know. Or there may be peak of the inspiration, or patient is laborly breathing. ठीक है, उस टाइम में लिया है, इसकी वजह से भी हो सकता है. या patient is holding the breath more, so that is also possible. Or it may be a case of pneumothorax. So other points we have to see over here. Okay. Yes. Now in the next point we come to next important point, that is looking at trachea in the X-ray and its importance. So what is the importance of looking at trachea in the X-ray?